Good evening, everyone, and welcome to this meeting in solidarity with the people of Joshimath. There are people here who know only English and only Hindi also, so we'll try to make it bilingual as much as possible. The campaign to defend nature and people is a political initiative with two objectives. One, to unite the scattered struggles of farmers, fishers, forest dwellers, and pastoralists against dispossession and loss of livelihoods. And two, to bring about a systemic change towards a sustainable economic model that protects nature and the people who work directly with it. Today's meeting focuses on the unfolding disaster at Joshimath, and we ask three questions. One, is it a natural disaster or a man-made one? Two, how are the people of Joshimath responding to this crisis? And three, what are the lessons for the Himalayan region and the rest of the country? We have three distinguished speakers. Atul Sati, who is the convener of the Joshimath Bachao Sangharsh Samiti, which represents the people of the town. Ravi Chopra ji, environmental researcher and founder of People Science Institute, who has headed two Supreme Court directed committees to investigate the impacts of hydropower dams in Uttarakhand and to monitor the construction of the Char Dham Pariyojana. And Professor Jagmohan Singh, educationist, historian, and public intellectual, who is the chairperson of the Campaign to Defend Nature and People, as well as director of the Shaheed Bhagat Singh Creativity Center. We will listen to the three speakers first and then open the forum for questions. You may also write your questions in the chat box on Zoom or on the CDNP India Facebook page. नमस्कार, जोशीमठ के लोगों के साथ एकजुटता के इस बैठक में आपका स्वागत है। प्रकृति एवं जन रक्षा अभियान एक राजनीतिक पहल है जिसके दो उद्देश्य हैं। एक, बेदखली और आजीविका के नुकसान के खिलाफ किसानों, मछुआरों, वनवासियों और चरवाहों के बिखरे हुए संघर्षों को एकजुट करना, और दो, एक सतत आर्थिक मॉडल की दिशा में एक ऐसा प्रणालीगत परिवर्तन लाना जो प्रकृति और इसके साथ सीधे काम करने वाले लोगों की रक्षा करता है। आज की बैठक जोशीमठ में सामने आ रही आपदा पर केंद्रित है और हम तीन सवाल पूछते हैं। एक, ये प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित? दो, जोशीमठ के लोग इस संकट से कैसे निपट रहे हैं? और तीन, हिमालयी क्षेत्र और देश के बाकी हिस्सों के लिए क्या सबक है? हमारे पास तीन विशिष्ट वक्ता हैं। शहर के लोगों का अपना संगठन जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती हैं। रवि चोपड़ा जी, पर्यावरण शोधकर्ता और पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के संस्थापक, जिन्होंने उत्तराखंड में जल विद्युत बांधों के प्रभावों की जांच करने और चार धाम परियोजना के निर्माण की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित दो समितियों का नेतृत्व किया है। और प्रोफेसर जगमोहन सिंह, शिक्षाविद, इतिहासकार और बुद्धिजीवी, जो प्रकृति एवं जनरक्षा अभियान के अध्यक्ष हैं और साथ ही शहीद भगत सिंह क्रिएटिविटी सेंटर के निर्देशक हैं। हम पहले तीनों वक्ताओं को सुनेंगे और फिर प्रश्नोत्तर के लिए मंच खोलेंगे। आप जूम और फेसबुक लाइव में CNDP इंडिया फेसबुक पेज में चैट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं अतुल सती जी को आमंत्रित करता हूं अपना बात रखने के लिए। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए या अवसर देने के लिए। और इस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं देहरादून में हूं और आज हम लोग यहाँ 14 दिन से हमारे साथी लोग, युवा साथी, वो जोशीमठ से और देहरादून तक की पैदल यात्रा पर थे। आज उस यात्रा का यहाँ देहरादून में समापन हुआ है और उस समापन के अवसर पर हम यहाँ मौजूद हैं देहरादून में। और देहरादून में ही मतलब काफी लोगों ने उनको रिसीव किया, ठीक से स्वागत हुआ है यात्रा का। और जगह जगह पर जोशीमठ से लेकर के देहरादून 300 किलोमीटर
में, इस पूरे दौर में जगह जगह लोगों ने उनको स्वागत किया, उनको सुना है, और यहाँ के स्थानीय मीडिया में उसको जगह भी मिली है। और ये यात्रा मुख्यतया जोशीमठ बचाओ, हिमालय बचाओ, पर्यावरण बचाओ और विनाशकारी जो विकास का ढांचा पहाड़ पर हिमालय में बन रहा है उसके खिलाफ, और एक पर्यावरण के पक्ष में, हिमालय को बचाने के पक्ष में ये यात्रा थी। तो मैं यही कह रहा था कि आज जो है ये हुआ है इसका हमारा समापन यात्रा का, और जोशीमठ में हमारा जो धरना है वो आज भी जारी था। 69th डे उसके लिए उसके हो गए हैं, और लगातार उसमें, उस धरने में लोगों की जो संख्या है उसमें एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, और लगातार उसमें 100, 200, 250, 300, कई बार 400 लोग उसमें होते हैं। और इससे ये बात साबित होती है कि इसका मतलब लोगों को दिक्कत है, विस्थापन पुनर्वास को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के लोगों में आशंकाएं हैं। और वो आशंकाएं इसलिए हैं कि लोगों के घर मकानों में न सिर्फ दरारें हैं बल्कि नीचे जमीन दरक गई है, जगह जगह सड़क पर, घरों पर के नजदीक जो है जमीन धंस रही है। और ये प्रक्रिया पिछले 15-16 महीनों से चल रही है, और पिछले 15-16 महीनों से ही हम लगातार इस सवाल को, इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें जो है लगातार इसकी उपेक्षा करती रही। और जब बहुत ज्यादा देर हो गई तब जाकर के सरकार जागी है। नवंबर 2021 से लगातार ये दरारों का सिलसिला शुरू हुआ, और तभी से हम लोगों ने सरकार के सामने ये मामला रखा। शुरू में हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा था कि सरकार जो है इसके कारणों की तलाश करे, कोई व्यापक सर्वेक्षण, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके पर्यावरणविदों की, वैज्ञानिकों की, भूवैज्ञानिकों की गठित करे और सर्वेक्षण करवाए। लेकिन सरकार ने जब ये नहीं किया तो स्वयं हम ही लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से स्वतंत्र वैज्ञानिकों का एक पैनल गठित करके ये सर्वेक्षण करवाया। उसकी रिपोर्ट जून महीने में हमने सरकार को दे दी, जून 2022 में, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। बाद में बहुत दबाव देने पर और यहाँ के आपदा प्रबंधन सचिव से हमारी व्यक्तिगत मुलाकात करने के बाद जो है सरकार ने एक कमेटी आपदा प्रबंधन विभाग के नेतृत्व में भेजी, जिसमें IIT रुड़की के लोग थे, CBRI के लोग थे, GSI के, वाडिया इंस्टीट्यूट के, और उन्होंने एक सर्वे करके रिपोर्ट दी। लेकिन वो रिपोर्ट बहुत ही आधी अधूरी रिपोर्ट थी। तो और उसमें जो है सारी जिम्मेदारी जोशीमठ के लोगों पर डाल दी गई। केवल ये कहा गया कि क्योंकि वहाँ सीवेज की सिस्टम खराब है, सीवेज सिस्टम नहीं है, जल निकास प्रणाली नहीं है, इसलिए जो है ये सब हो रहा है। उसके बाद जो है, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, और लगातार सवाल उठाने के बाद, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी जब ये नहीं हुआ तो एक आंदोलनात्मक कदम हमको उठाना पड़ा। और पहले जो है 24 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन 2-2.5 हजार लोगों ने वहां किया, और उसके बाद लगातार जो है पहले 4 तारीख जनवरी को एक मशाल जुलूस, और उसके बाद जो है 5 तारीख को चक्का जाम, बाजार बंद, ये सब हुआ। और तब जाकर के प्रशासन थोड़ा हरकत में आया, और जो है उसने कुछ ये चक्का जाम खुलवाने के लिए हमसे समझौता किया, जिस समझौते के तहत ये तय हुआ कि प्रशासन जो, जिन लोगों के घर मकान टूट गए हैं, जो असुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करेगा तत्काल, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करेगा। और जो NTPC की परियोजना, जल विद्युत परियोजना है, उस परियोजना के कारण, क्योंकि हम इसको बड़ी वजह मान रहे थे जोशीमठ की आपदा के लिए, उसका काम बंद किया जाएगा। नीचे जो जोशीमठ की जड़ में बाईपास बन रहा है, उस बाईपास का काम बंद होगा। और जब तक लोगों की स्थायी व्यवस्था नहीं होती, पुनर्वास विस्थापन नहीं होता, तब तक के लिए लोगों के रहने के लिए प्रीफैब्रिकेटेड हट्स बना के देंगे, जिसमें हमसे वादा किया गया लिखित में कि 4000 प्रीफैब्रिकेटेड हट बनाई जाएंगी। लेकिन आज मतलब 2 महीने से ज्यादा इसमें हो गया, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च भी चला गया, और अभी तक एक भी प्रीफैब्रिकेटेड हट वहां नहीं बना है।
तो इसको लेकर के फिर कि स्थायी तौर पर पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजे, जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन यानी कि स्थिरीकरण और एनटीपीसी परियोजना पर जिम्मेदारी आयत करने और उसको बंद करने, इन सब सवालों को लेकर के हम लोगों का आंदोलन शुरू हो गया, जो कि अभी तक जारी है। सरकार ने आंदोलन के दबाव में हम लोगों की मांग ये थी कि एक जोशीमठ के मामले में एक विस्तृत और व्यापक पुनर्वास विस्थापन नीति बनाई जाए। उसके लिए हमने सुझाव दिया था कि भारत सरकार की एक विस्थापन पुनर्वास नीति है 2007 की। हमारा ये कहना था कि उस 2007 की जो भारत सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति है, उसको आधार बना करके उसमें जोशीमठ की जो व्यावसायिक स्थिति है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसको उसमें समाहित करते हुए एक व्यापक विस्थापन पुनर्वास नीति बनाई जाए। लेकिन उसके बजाय सरकार ने मात्र जो है अभी तक जो घर टूट गए हैं उनमें भी कुछ ही घर, सरकार के खुद के आंकड़े के मुताबिक जो है 867 से ज्यादा घरों में दरारें हैं। लेकिन अभी तक सरकार केवल जो है 200 के लगभग घरों का मुआवजा देने, वो भी जब हम लोगों का सुझाव था सीपीडब्ल्यूडी के रेट पर उनका मुआवजा निर्धारित हो, उसी रेट पर मुआवजा देने के लिए तैयार हुई। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन अभी भी जोशीमठ में जिनका मकान टूट गया, उनकी भूमि का क्या होगा, उनको भूमि के बदले भूमि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जोशीमठ सुरक्षित है अथवा असुरक्षित है, वहां का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के कोई स्पष्टता उसमें नहीं है। सरकार ने आंदोलन के दबाव में भारत की शीर्ष 8 वैज्ञानिक संस्थाओं से जीएसआई, सीबीआरआई, एनजीआरआई और वाडिया इंस्टीट्यूट, इसरो, भारत के जल संसाधन मंत्रालय की कमेटी, इन सब ने मिलकर के जोशीमठ का व्यापक सर्वेक्षण किया। लेकिन अभी तक जो है उस सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो सरकार ने सार्वजनिक नहीं की, उसको साझा नहीं किया है। इसको लेकर के हमारा कहना है कि जब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती तब तक ये पता करना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है कि जोशीमठ की क्या स्थिति है। भले ही स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर रवि चोपड़ा, डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एसपी सती, इन लोगों का ये कहना था कि जोशीमठ के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पर कैविटी बन गई है। इसको अन्य भी वैज्ञानिकों ने इस बात को जो है अनौपचारिक तौर पर इस बात को कहा है, जिसका कि प्रमाण ये मिल रहा है कि जगह जगह जोशीमठ में लगभग 20 से 25 स्थानों पर बड़े बड़े पॉट्स, गड्ढे बन रहे हैं। उनका कारण हम लोग यही मानते हैं कि वो गड्ढे इसलिए बन रहे हैं कि नीचे जमीन में कैविटी बन गई है, जगह खाली हो गई है, जिसकी वजह से ये गड्ढे जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यतया जो है जो बद्रीनाथ का राजमार्ग है उस पर तो लगातार ये प्रक्रिया हो रही है और उसको प्रशासन मिट्टी और पत्थरों के जरिए भर देता है, जो कि बहुत ही अस्थायी तदर्थ व्यवस्था है। इसके लिए हमने कहा था कि वो जो है वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों से की राय से और तकनीकी जो मतलब एडवांस इंजीनियरिंग के जरिए इनका समाधान करे, जो कि अभी तक नहीं हुआ, जबकि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होने में मात्र 1 महीना का समय बाकी है और सरकार का सारा जोर उस यात्रा पर है। जबकि हमारा ये कहना था कि बगैर जो विस्थापित होने वाले लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनका विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजे का सवाल को हल किए बगैर आप बद्रीनाथ की यात्रा को सुचारू नहीं चला सकते। इस पर जो है अभी सरकार की जो उपेक्षा है बनी हुई है। इसी को लेकर के ये आंदोलन हमारा लगातार जारी है और इसके साथ ही हम लोगों ने, क्योंकि जोशीमठ का जो ये मसला है ये पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस पर लोगों का, पर्यावरणविदों का, समाज के चिंतित सुधीजनों का ध्यान गया है। तो ये क्योंकि एक ऐसा समय है कि जब लोगों का ध्यान इस पर गया है, तो हम समझते हैं कि ये जो है हिमालय में जो विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है, जो विनाशकारी विकास का ढांचा है, जो जन विरोधी विकास का ढांचा है, पर्यावरण विरोधी विकास का ढांचा है, इस समय इस पर भी बात करने का ये सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि इसको लेकर के लोगों में एक जागृति आई है।
तो इस को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया और इसी संदर्भ में ये पैदल यात्रा भी निकाली गई, जिसका कि एक संदेश लोगों तक गया है। इसके अलावा बीच में हमारी इसी जूम मीटिंग में हिमाचल, सिक्किम और अन्य हिमालयी जो राज्य हैं उनके लोगों के साथ भी बातचीत हुई है और हमने ये कोशिश की उनसे बातचीत के दरमियान कि एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म सभी हिमालयी राज्य के प्रतिनिधियों का बने, जिसमें हिमालय में होने वाले विकास के इस विनाशकारी ढांचे का विरोध हो, सरकारों पर इसके लिए दबाव बने। तो इसमें कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी बातों के ही लेवल पर है, अभी ऐसा कोई ढांचा बना नहीं। बीच में जब लद्दाख में वांगचुक साहब का वो चल रहा था, तो हमने भी उसके समर्थन में बात कही थी और वहां से भी इसको रिस्पॉन्ड किया गया था। डोडा में, जहां जम्मू कश्मीर में ये घटना, इसी तरह की घटना हो रही है, वहां भी लोगों का ये कहना था कि हम जोशीमठ की घटना की तरफ देख रहे हैं कि वहां क्या न्याय होता है, वो उस पर हमारी निगाह है। उत्तराखंड में जगह जगह जहां जल विद्युत परियोजनाएं, रेलवे की सुरंगों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और इस तरह के कार्य हो रहे हैं, वहां वहां इसके दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं। अभी ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक 122-24 किलोमीटर एक रेलवे की परियोजना बन रही है, जहां 80 किलोमीटर वो सुरंगों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जहां जहां सुरंगें बन रही हैं वहां उसके दुष्परिणाम दिखने लगे हैं। रुद्रप्रयाग में एक गांव उसके जद में आ गया है जो ढह रहा है, मरोड़ा उस गांव का नाम है। देवप्रयाग में, श्रीनगर में, जहां जहां सुरंगें गुजर रही हैं वहां वहां लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कर्णप्रयाग में लोगों के घरों में दरारें हैं। उत्तरकाशी एक जिला है जहां ये परेशानी है, पिथौरागढ़ में है। यानी कि उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र है टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है, जो लगातार टिक टिक कर रहा है। और अब जिस तरह की बरसात हो रही है, जिसमें कि अचानक एक ही जगह पर बहुत सारी बारिश होती है, जिसको बादल का फटना या अतिवृष्टि और भूकंप। अभी बीच में ही उत्तरकाशी में हफ्ता भर पहले ही जो है एक ही रात में 5 बार भूकंप के झटके आए हैं और उसके 2 दिन बाद फिर से एक झटका आया। तो लगातार भूकंप का आना, अतिवृष्टि का होना, ये जो है लोगों में लगातार एक बड़ी आशंका का कारण बना हुआ है। और उसके ऊपर वैज्ञानिकों के किए गए अध्ययन को लोगों से छुपाना, जैसे कि इसरो का जो डाटा जो सार्वजनिक हुआ, बाद में सरकार ने जो है उसको वेबसाइट से हटवा दिया अपने दबाव के चलते। और इसके अलावा भी जो गृह मंत्रालय का गैग ऑर्डर है, जिसमें कि लोगों के, वैज्ञानिकों के कुछ भी कहने पर सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि क्या स्थिति है वो लोगों के लिए जानना असंभव हो गया है कि जोशीमठ की क्या स्थिति है और वहां खतरा कितना बड़ा है, धंसाव कितना हो रहा है। लगातार केवल वो जो है इधर उधर की खबरों से पता चल रहा है कि वो जो है इसरो के जो डेटा जारी हुआ था जनवरी के महीने में, उसके बाद से जो है एक बीच में जो है आज से 10 दिन पहले अध्ययन आया जिसमें कहा गया कि ये जो धसाव है, सब्सिडेंस की जो प्रक्रिया है दुगनी हो गई है, डबल हो गई। बट अब ये मालूम नहीं कि वो किससे डबल हो गई है, इसरो के डेटा आने के बाद डबल हुई है कि पहले वाले डेटा से डबल हुई। तो ये सब आशंकाएं, ये सब चीजें जो है लोगों को और ज्यादा आशंकित कर रही हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार पर इस बात के लिए दबाव बने कि वो जो है वैज्ञानिक अध्ययनों को, वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सार्वजनिक करे, लोगों को आश्वस्त करे कि क्या स्थिति है। और इसके अलावा भी हिमालय में जो इस तरह का विकास हो रहा है, ये पूरा जो आपदा है जोशीमठ वाली, ये तो पूरी तरह से मानव जनित आपदा है। हाँ, जरूर इससे पहले जो 2021 की आपदा है 7 फरवरी की, वो जो है प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उसमें भी क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं उसके सामने, उस बाढ़ के सामने आ गए और उससे मानव 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसमें उसमें भी जो है उसको एक प्राकृतिक घटना को आपदा बनाने में जल विद्युत परियोजनाओं का हाथ है। अगर वो जल विद्युत परियोजनाएं वहां न होती तो वो जो प्राकृतिक आपदा है वो अपना जो है, जो उसका कोर्स है वो पूरा करती। लेकिन जो है क्योंकि वहां उसके रास्ते में, उसके मुहाने पर ही जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, ठीक जहां ग्लेशियर्स के रास्ते हैं, तो इसलिए वो एक बड़ी आपदा का रूप ले ले रही है।
तो इस पर जो है पुनर्विचार करने की जरूरत है कि ये जो विकास है ये किस तरह का है। अरे केवल जोशीमठ का वो नहीं, हाँ जोशीमठ एक उदाहरण बन करके सामने आया है, और इस उदाहरण को सामने रखते हुए हम इस समय अगर लोगों के बीच में ये जन जागरूकता, सरकारों पर ये दबाव बना पाए, तो ये एक अवसर, जैसा कि मोदी जी का कहना आपदा में अवसर, तो ये हमारे लिए भी, ऐसे जागरूक लोगों के लिए भी, लड़ने वाले लोगों के लिए भी, और जो पर्यावरण के प्रति चिंतित लोग हैं उनके लिए भी एक अवसर है कि वो इस अवसर में का लाभ उठाते हुए लोगों के बीच में ये बात ले जा सकते हैं। एक दबाव का काम ये कर सकता है। तो यही हमारी बातचीत है। इसमें अगर कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो मैं फिर उसका उत्तर बाद में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अतुल। दीपक जी, अगर आप इसका एक सारांश अंग्रेजी में दे सकते हैं, इफ यू कैन समराइज इन इंग्लिश फॉर पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो हिंदी। दीपक जी। Yes, I'll try to be brief. I cannot take 20 minutes. Atul ji said he has completed Yatra today in Dehradun, from Joshimath to Dehradun, and they have got very good response. People listened to whatever they had to say about destructive development. पैदल यात्रा। They have, yeah. Can you hear me? Yes, yes. They have, for last 69 days, they have been holding dharnas in Joshimath, and every day 200 to 400 people regularly participates in dharnas. And for the last 15 to 16 months, they have been trying to convince the government, but government has continuously ignored their demands and their presentations. In November 2021, first time cracks appeared in the houses. Around June, government appointed a committee which gave the report that nothing was alarming, only there was sewer system was damaged, and that was the main problem. On 21st December, Joshimath people organized first demonstration. On 4th January, they organized torch procession and then Chakka Jam. So they were invited to have negotiations, and they demanded that people should be shifted to safe places, and some work should be stopped, and that is bypass is being constructed, that also should be stopped. And there are government promised to build up to 4,000 huts, but not one hut has yet come up. So resettlement and compensation, all these are bigger issues, and detailed and permanent resettlement policy has to be needs to be worked out. So Atulji says that they asked for 2007 policy from the commercial and geographical status of Joshimath, because there are 870, more than 870 houses. They have seen cracks. Only two government has surveyed, and only 200 houses compensation has been agreed. So future of Joshimath is not clear. Then 8 scientific organizations came together at the behest of their police organization. They surveyed, and they gave their report, and that report is not published so far. And Badrinath Yatra is just 1 month away, but government and attention is focused on the Badrinath Yatra. And the Bachao Samiti says that first, if you can't settle people's issue, you cannot even conduct the yatra safely. In the so now they have raised the issue of Himalayas, not just this thing, not just Joshimath, but entire Himalayas destructive development issue. They are talking to Himachal Pradesh activists also, because it is all, and Ladakh also. Ladakh, there was a recent issue in Doda. Doda in Jammu and Kashmir is also facing the same problem. Still, 120 kilometers
Uttarakhand, Rishikesh, Rudraprayag train project is still going on, and they'll build tunnels. So if you go on to constructing tunnels, that means Joshimath is living on the time bomb, which is ticking fast. And in the last 1 week, they experienced 5 shocks of earthquake. And government itself says that subsidence has doubled. Speed of rate, it is not clear. But development in Himalayas is a bigger national issue. And because this kind of development converts natural calamities into bigger human tragedies also. So all people should pay attention to it. Thank you, Rajesh. Thank you very much, Deepak ji. There was just one point, perhaps, which was missed, that when the government did not respond initially, the people of Joshimath themselves contacted scientists for an independent inquiry. That was Dr. Sati and Raviji were members of that. So Raviji is here and he will speak in detail. I will invite him next to place his views. मैं अभी रवि जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना बात रखें. Thank you, Rajesh. I will request all of you to excuse me a bit. There will be a fair amount of overlap with what Atul has just stated, and I'm going to be referring to my notes since I can't remember many things. Now, first of all, Joshimath's history dates back to the 8th and 9th century when Adi Sankaracharya founded the Jyotirmath over here. It's a very important place. It's the gateway to Badrinath, to Hemkund Sahib, to the Valley of Flowers. Motorable roads came to this area in around 1962 after the Indochina War, and since then an army base has been established here. Now, Joshimath lies on old landslide debris, and it is at the edge of the main central thrust, which is seismically the most important or the most sensitive fault in the Himalayan region. It lies in zone 5 of the seismic zones. Joshimath is built on a pile of sediments which are several meters thick that lie on rocks. But the underlying rocks themselves have fissures and they are jointed. That is, they are not very arranged in a very stable manner. There's like a jumble of rocks. The soil has very limited load-bearing capacities and is not capable of sustaining heavy or massive structures. The Alaknanda and Dhauli rivers are constantly eroding the base of the hill. Now, if you can see this, this is what the Joshimath mountain will appear to you from the other side of Alaknanda river. From this side, the Dhauli Ganga comes. Somewhere here it will meet the Alaknanda and then join the Alaknanda and flow along the other side of the slope. Okay. Now, these slopes are unstable. There are structural weaknesses and the microseismic activity causes very slow movement of the of some parts of the slope. It's a phenomena that scientists refer to as creep. In addition, there are several
human-made factors. The first and the most important one that was flagged as far back as in 1976 is deforestation. Then there is infrastructural overloading. Just think of it that in the year 2001, when Uttarakhand state had just been formed, Joshimath's population was about 13,000 people. In 2021, it is probably 25,000 people, almost double. In 2019, there were 5 lakh visitors who came to Joshimath for various reasons. Now, there is a lot of building construction, there's a lot of population, but there is inadequate drainage of the wastewater. There, as Atul has explained, there's a hydropower project, the Tapovan Vishnugad hydroelectric project on the Dholi Ganga, and its tunnel passes through the Joshimath mountain. The tunnel has been made by partly by boring the mountain and partly by blasting through it. Currently also, there is a small bypass of the main Badrinath highway. The bypass is called the Helang Marwadi bypass, and that is being constructed along the base of the slope. Now, in 1976, a committee, the Mishra committee, had warned that the base of the mountain, which is continuously being eroded by the Alaknanda and the Dholi Ganga rivers, it should be strengthened by putting security walls, by putting spurs. None of that has been done. And on the contrary, the base is now being weakened by the continuous blasting of the rocks in order to build the bypass. Now, the current disaster, which Atul has described, scientific and technical papers, circumstantial evidence gives us enough reasons to believe that much of the current crisis can be traced essentially to the Tapovan Vishnugad project tunnel. Okay, now I'll show you another picture. Can you see this? Okay. Yes, it is visible. Okay, it is visible. So here is the Dholi Ganga. It starts here, goes around, comes up to Vishnu Prayag, and then joins the Alaknanda and flows on this side. This line in red, this is Tapovan, and from Tapovan the tunnel starts and it goes under the mountain and comes out at Helang at this end. It's about 12.25 kilometers long. Now, Atul reminded us that of the big flood in the Dholi Ganga on February 7, 2021. At that time, the flood smashed the Tapovan Vishnugad barrage, and the flood waters entered the tunnel, killing about 200 people. Now, just think of it. The flood waters is a huge volume of water, and it's hurtling, it's literally smashing through the tunnel. It's not only water. There are sediments, there are rocks, there are boulders, tremendous amount of energy that smashes the walls of the tunnel. And an earlier engineering analysis tells us that when that sort of thing happens in a tunnel, then new fissures are introduced in the rocks outside the tunnel, and old fissures, existing fissures, are widened. In other words, the permeability of the rocks increases. Permeability is the ability of water to move through the rocks. So now you have created more opportunity for that huge flood water to get out of the tunnel at some point,
And a few months later, in November 2021, local residents reported cracks in several parts of Joshimath. This is the kind of circumstantial evidence which is available, linking the appearance of fissures to the tunnel. Now, Joshimath people have tried to draw the attention of the government officials and the political leadership to the deteriorating condition of Joshimath slope. And as explained by Atul, the government has remained surprisingly unresponsive. You would think that a political government, political leadership would jump at the opportunity to rescue people, but nothing of the sort. It was only on the night of January 2nd, when a huge discharge of water and subsidence inside the JP Hydro colony took place, it forced the government to act. Now, since then, cracks keep forming in different parts of the town. They keep getting bigger, they are wider, and worse still, large cavities are forming. So apparently what's happening is that the water is flowing inside the slope, okay? And wherever it is encountering loose soil, it is removing that soil, it is eroding that soil, and whatever is above that column of water, it's sinking down. So the large cavities have been formed in the ground, and as Atul explained, the government has appointed 8 major agencies to determine the causes of the slope instability and recommend mitigation measures. But so far, even though interim reports have been submitted to the National Disaster Management Agency, the government is absolutely tight-lipped, and the people who are working on the projects, they have been forbidden from publicizing their findings. The residents of Joshimath, in the meanwhile, wait with bated breath for some measures to ensure the structural security of their town and their homes. With each passing day, the monsoon draws closer, and it raises the anxieties. The government seems more anxious that the Char Dham Yatra should not be affected. It keeps trying to reassure people that the problem is not so grave. But with the ground full of fissures and the increasing cavities, the people have a reason to worry, to be anxious. Now, there are larger issues, as Atul has explained, that since statehood, wide roads, hydroelectric projects, and more recently railways have been pushed into geologically weak regions in the name of development. And at the same time, the slopes are being overloaded with accelerating urbanization and focused tourism. The increasing threats due to climate change are ignored in planning these development adventures. I can only call them development adventures. Therefore, Joshimath should be viewed not only as a symbol of what is happening throughout the Himalayas and the other mountain areas of the country, but I would say in most other insecure parts of the country, like the coastal cities, like the cities like Mumbai, Chennai, Visakhapatnam, etc. Our approach to handling disasters is a disaster in itself. More often than not, we wait for disasters to happen before we do something. We don't take mitigation measures in advance. Some very simple things can be done. We know that there is going to be temperature rise,
We know that there are going to be heat waves, but have you heard of any city going ahead with a program to build heat shelters? Can we not do simple things like that? Then there's the question of the coastal cities that I just mentioned. How many people are studying the drainage of Mumbai? Back in 2005, when there was that huge rainfall event in Mumbai, extreme rainfall event in Mumbai, and the town got choked with floods, there was talk of doing that. But since then, not much has happened. The courts, they continue to issue orders banning construction along rivers or by the sea. But these orders are not enforced. So we just see repeatedly, even in Joshimath, I should point out that there is the Mishra Commission's report of 1976. Then in 2014, the Supreme Court committee that I headed to investigate the impact of hydropower projects on the massive floods that took place in 2013, we recommended that no dams should be built in the paraglacial zone. This is the zone or the valleys north of the main central thrust. But the government didn't do anything about it. Had it paid attention to that recommendation, the 2021 disaster could have been averted, and for most likely, the current crisis in Joshimath would not be there. So, when we look at these issues, it's very clear that we need to build sustainability and equity into our development projects if we want to have a secure future. But when I look at the process by which projects are approved, most of you know it, that these processes are being systematically weakened. Recall the environmental impact assessment rules of 1994. They were first weakened in 2006, and then in 2016, 2020, 2021, repeatedly, they're almost useless because they don't apply to many linear projects like different kinds of roads or to the National Waterway 1. Many projects now are being removed. I think if the government has its way, the Ken-Betwa link type of projects will also not have any environmental impact assessments in the future. The reports, the environmental impact assessment reports, are more designed to get clearances rather than to protect the environment. Many of you know the defects of those. When you look at the courts, what do the courts do? The courts at best can issue orders, even when they are good orders. Who has to execute them? The executive has to execute them, and the executive will just sit on them. So a lot of this then calls for a very serious effort to relook, to organize, to conscientize, to organize people for strengthening democracy, for transferring control of a lot of these natural resources, whether it is the land, whether it is the water, it is the forest, back to the local population. If we have rights and responsibilities carefully balanced at that level, we might be a bit better off. Thank you. Thank you, Ravi ji. But can I request you to give a brief summary of your points in Hindi? जरूरत है? मेरे ख्याल से है कुछ, हाँ, क्योंकि मैंने काफी चीजें तो दोहरा दी थी जो अतुल ने पहले कही हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक तो मैंने इस पर ध्यान दिलाया, जोशीमठ की भूगर्भीय बनावट कैसी है।
कि वो पुराने भूस्खलन के मलबे पे टिका हुआ शहर है, और उसके नीचे जो चट्टानें भी हैं वो भी इतनी सुदृढ़ नहीं है, वो उनमें भी कमजोरियां हैं। फिर उसके बेस पर धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी उसके बेस को काटती रहती हैं, और उससे भी जो वहां की ढाल है वो कमजोर होती है। अब जो वहां पर जो प्राकृतिक कारण तो मैंने बताया आपको कि ढाल कैसे कमजोर होती है, उसके अलावा मानव जनित कारण भी हैं, जैसे जंगलों का और पेड़ों का कटान जो हुआ शहर बसाने के लिए। फिर वहां की मिट्टी जो है वो इतनी ठोस तो है नहीं कि भारी वजन सह ले, लेकिन उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की गई, चाहे वो आर्मी ने की हो, चाहे वो इस होटल जो बड़े बड़े बने हैं वहां पर। और इतनी ज्यादा आबादी जो वहां पे फैली है, शायद उस इलाके की इतनी आबादी की वहन शक्ति है नहीं। फिर वहां पर टनल खोदी गई तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट के लिए, और अभी फिर से जो उसका पहाड़ का जो बेस है, जो उसका पैर है, उस पर चट्टानों में को उखाड़ने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है, ताकि वहां पर एक बाईपास सड़क बन जाए। जो वैज्ञानिक साहित्य है जो समय समय पे पब्लिश होता है जर्नल्स वगैरह में, उसके आधार पर और कई जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य कारण, आज की परिस्थिति का मुख्य कारण वो टनल है जो तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। और इसके पीछे फिर मैंने समझाया कि कैसे 7 फरवरी 2021 का जो बाढ़ इस टनल में आया, उसने न केवल 200 लोगों की मृत्यु की, लेकिन उसकी वजह से टनल के बाहर जो चट्टानें हैं वो भी कमजोर हुई हैं, और उनमें दरारें नहीं बनी, पुरानी दरारें ज्यादा खुल गई, और उनमें से पानी निकलने की संभावना बढ़ गई। इसी कारण कुछ महीनों के बाद नवंबर 2021 में फिर पूरे शहर के कई इलाकों में दरारें आने लगी। लेकिन लोगों ने इतना कोशिश की सरकार के ऑफिसर्स को चेताने के लिए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 जनवरी की रात को जब जेपी हाइड्रो कॉलोनी में भूदसाव हुआ और नीचे से पानी निकला, तब जाके सरकार जगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि समय के साथ जो दरारें हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उनका जो साइज है वो बढ़ रहा है, और जैसे अतुल ने समझाया कि जगह जगह पर गड्ढे बन रहे हैं। जहां भी मिट्टी कमजोर है, वहां पर अगर पानी नीचे से बह रहा है तो वो मिट्टी के कण को उठा के ले जा रहा है पानी, और उसके ऊपर जो भी बसा होगा वो फिर धंसेगा। केंद्र सरकार ने 8 संस्थानों को जिम्मेदारी दी कि जोशीमठ जाके अध्ययन करे और बताए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी वहां पे शोध हुआ है उसकी रिपोर्टें सरकार के पास हैं, सरकार बता नहीं रही है कि क्या जानकारी है मिली है, और ना ही साइंटिस्टों को अनुमति दी है कि वो अपने शोध की पब्लिसिटी करें। तो जोशीमठ की जनता जो है वो बेचारी इंतजार कर रही है
उसकी जान सूख रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जब बरसात का मौसम आ गया तब क्या हालत होने वाली है। सरकार बार बार उनको सांत्वना देने की कोशिश करती है, कहती है कि नहीं, 4 धाम यात्रा चलेगी, संकट इतना बड़ा नहीं है। लेकिन लोग जब देख रहे हैं कि दरारें बढ़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है, गड्ढे बन रहे हैं, तो उनकी चिंता तो बढ़ेगी ना, स्वाभाविक है। अब ये सारी जो है, इनको मैं कहता हूँ डेवलपमेंट एडवेंचर्स। जो पहाड़ों में जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, इतने विस्फोट हुए हैं, जगह जगह पर पहाड़ की ढाल जो है वो कमजोर की गई है। और इसके साथ साथ जो हमारे शहर हैं उनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, स्थायी आबादी भी बढ़ रही है, और जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या भी लाखों में चली जाती है। मसूरी शहर में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं गर्मियों के समय। अब इसके साथ साथ हम ये भी भूल जाते हैं कि ये मौसम परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है, और इस दौर में हमें क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है जब ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। लेकिन जो समस्या, जोशीमठ तो एक प्रतीक है, और केवल हिमालयी क्षेत्र या पहाड़ के क्षेत्र, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हो, सिर्फ इन पहाड़ों की समस्या नहीं है, लेकिन जो भी संवेदनशील इलाके हैं जिन पर मौसम परिवर्तन की मार पड़ सकती है, पड़ने वाली है, ये उन सब के लिए एक प्रतीक है। क्योंकि हम लोग जिस विवेक से हमें अपने विकास की योजनाएं बनानी चाहिए, वो विवेक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ना ही हम उसको इतने ध्यान से क्रियान्वयन में लाते हैं कि लोग का जीवन सुरक्षित रहे, उनके इलाके सुरक्षित रहे, उनका पर्यावरण सुरक्षित रहे। भोपाल की गैस त्रासदी के बाद कई एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में, उसके बाद एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स बने, लेकिन उनको भी समय समय पे कमजोर किया गया है, खासकर पिछले 5 सालों में। और अगर हमें ऐसी परिस्थितियों से बचना है तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। पहले तो लोगों को समझाया जाए, ताकि उनमें उनको प्रेरित किया जाए कि अब कुछ करने का समय आ गया है, उनको संगठित किया जाए, और फिर जो हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं उनको मजबूत किया जाए। अंत में जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर स्थानीय समाज का पहला हक बनाया जाए। तब जाके अगर हक और जिम्मेदारी का एक बैलेंस हो सकता है, तब शायद हम ऐसी परिस्थितियों से बच सकें। धन्यवाद। Thank you very much. Thank you very Rajesh. much. Thank you very much, Ravi ji. That was much more than a summary. Thank you. मैं अभी प्रोफेसर जगमोहन सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना बात रखें। बहुत शुक्रिया राजेश जी। और मैं समझता हूँ कि सती जी ने और रवि जी ने मतलब वहाँ की जो पूरी परिस्थिति है उसके साथ हमें उसको बताया है। We have been introduced to the real reality of the situation. I'm only reminded of 2 things. That one is that Tagore, while criticizing the British governance, said that it is a bureaucracy, and the bureaucracy he defined is like we get the food in the packed packages, and it is written on that it is without the touch of hand. So I think the missing is
that human touch which is there. And it is not only yesterday. There was a news in Indian Express that Himachal is also having landslides. And then they had a overall picture of the India from the satellite, which tells us that there are more weaker areas where this is happening. And if we bring it that the type of development which we has taken, even in Punjab, the soil's absorption power of water has been reduced to 20%, where it is 80% which is required. And I remember that university sent me to California to study. And they said that California is the future of India. And now I get the news from the California that if that is the future, the whole Napa Valley is sinking because there is overdraft of water from there. The whole forest destruction is creating mud floods, not the water floods, but the mud floods. And the half of California is continuously under fire. So I think the development model, and as rightly, I think we can emphasize on that, it is the communities which have to take control of if we have to survive. Otherwise, it is greed versus the life of the people, which is coming up there. And that is why we jointly thought of having a campaign for defense of nature and people, because nature and people are combined. And this is happening everywhere because Joshimath has become a very important issue because it is practically happening. And the response which is there is that I was actually astonished that the minister went and said, let us do puja because something is happening. So how could we in this world of 21st century, we are talking of the fourth industrial revolution, where artificial intelligence is and other means are going to be important. But what is happening is that we are living in the 3rd century or 4th century where people didn't knew what is happening, and it was only left was to worship and maybe seek. But now the whole destruction which is taking place. And another factor which I think we should need to talk about is that this whole development, constructive development, is not by our own resources. It is all on the debt which is being created on it. It is debt is destroying the whole economic basis, and then it is destroying the nature also. So in this period, I think a larger environment and get together of all those movements at the ground level, and they could join hands to understand. And as it was talked by Sati, that the first reaction of the state was no information should leak out. The reports are sealed, they are lying there, but they are blind by their profit and other movement, and which is the whole economic structure also giving. We reminded that in Vienna, there was a human rights conference, and one of the things was adopted that the benefit of these development should go to the people. But now we see that so-called development, which is now being adopted, it is virtually destroying the people. So in this, we need a larger effort of, and that understanding which is there, how to take it to the people, to make them understand, and they will just as is being done, that there is a movement in Joshimath that is where the people raise the issue, and the government is to serve the people, not serve the profit making in those projects. So I think this is a level, and I'm also reminded that Bhagat Singh's last letter of 20th March, 3 days before he was hanged, was to the governor of Punjab,
in which he said that actually you have charged us with waging war against King George, Emperor, but it is a kind of people are struggling for protection of their labor, their and also natural resources. It is natural resources was written, and this is what is, and although, and now it makes very clear that it is not the 370 clause to be removed from Jammu and Kashmir, but they knew the lithium is to be exploited, and blindly that too, not with the concern to the nature. And similarly, we see that Ladakh people are, they said we were very happy that we are given a UT status, but our own right of planning has been taken away. So I think this is what is happening, and it has to be registered, and it has to be by the people who are there and also from outside, that we should make a larger effort to make check on this. And I think that is learning from the Joshimath movement, which is currently there. It is not only helping them, but it is helping the whole future of Indian so-called development, where it should be human and nature sensitive, that we have to be sensitive to the nature. Nature is not, it is abundant. It gives you a lot of resources, but at the same time, if we try to make changes in it, or we try to tingle with it, it is destructive. We have seen it in the past, but the only part is that are we a learning society, or we are only to surrender against it. So I think it's very clear Raviji's experience and all his effort of learning about that has been placed. Sati's activism, not only for activism, but for protection of the nature and people's rights. And we, from the in defense of nature and people, join with that and make it that we take this message to a broader level. तो मैं जो कहना चाह रहा था इन ब्रीफली, कि पहले तो है कि टैगोर ने एक दफा बड़ा क्रिटिकल रिमार्क दिए थे कि जो सरकारें हैं, उस वक्त ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, तो ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि आजकल हमारे फूड आती है बक्से में बंद, और उस पर लिखा होता है कि ये बगैर ह्यूमन टच के इसको पैक किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसी तरह चलती है, और लगता है कि 75वें साल में जब हम अपनी तरफ से तो ये कह रहे हैं कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम उसी को कॉपी कर रहे हैं जो ब्रिटिश ने किया था। यही रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन वाज देम। और दूसरा जो है कि मतलब मैं जब कैलिफोर्निया, मुझे यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर क्योंकि आ गया था, कंप्यूटर के लिए भेजा, तो उस वक्त ये बताया गया कि कैलिफोर्निया एक मॉडल है जो आगे बढ़ना चाहिए। और आजकल जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वो मॉडल है तो फिर तो वहाँ नेपा वैली सिंक कर रही है, वहाँ ट्रेमर्स आ रहे हैं, वहाँ पर फ्लड्स जो हैं वो मड फ्लड्स हैं, वो पानी के फ्लड्स नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो जंगल है उनको तय किया गया है। तो हमारे सामने, और इससे पहले भी मतलब इसी एरिया में हुआ, और पूरे जो हिमालयन रेंज है वो यही कुछ हो रहा है, क्योंकि ब्लाइंडली उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वो एक्सप्लॉइटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी काज कर रही है। तो आज हमें जरूरत है कि हम और उस पे और भी ज्यादा कि उस पे ये भी लागू किया जा रहा है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको मतलब बंद लिफाफे में रखा जाए, लोगों के पास ना जाए, उल्टा लोगों को मतलब ये जो 4 धाम का मतलब है मतलब उस पे कि हम, और एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपने ये भी नोट किया होगा कि जितनी रेलवे गाड़ियां चल रही हैं, जो पब्लिक रेलगाड़ियां थी वो बंद हो गई हैं, और सब रेलगाड़ियां जो हैं वो धार्मिक स्थानों के नाम पे धार्मिक स्थानों को ही जा रही हैं। क्या मैसेज हम कर रहे हैं
लेकिन इसमें जो मतलब इसका हल है वो इसी में है कि हम मतलब हाथ से हाथ मिलाएं और कुदरत के प्रति सेंसिटिव होते हुए लोगों की जो डेवलपमेंट है उनके हाथों को मजबूत करें, ना कि चंद जो ठेकेदार हैं उनको मजबूती आए। और ये भी कि ये जो तरक्की हो रही है ये हमारे आने वाले बच्चों को डिस्ट्रॉय ही नहीं करेगी, उनके सर पे कर्जा भी दे के जाएगी, जिसको वो ढोते ढोते फिर उसी गुलामी में मतलब रह रहे होंगे, जिस गुलामी को मतलब हमने 175 साल मतलब उसके साथ खिलाफ लड़ाई ली और स्वराज तक पहुंचे। लेकिन अब हमें फिर दोबारा इस चेतनता की जरूरत है। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका। थैंक यू। बहुत धन्यवाद जगमोहन जी. So thank you to all the three speakers for their extremely illuminating talks so far. We will now open the floor for questions. And the way we will do it is I will request all of you, those who have questions, please raise your hands. Use the reactions button at the bottom of the page to raise your hand. And one by one, the questions can be asked. मैं अभी मंच खुल रहा है प्रश्न उत्तर के लिए. मेरा निवेदन यह है कि लोग वो जो रिएक्शन बटन में रेजिंग हैंड्स वाला आइकॉन है उसमें क्लिक करें और अपना हाथ उठाएं और अपना सवाल उसके बाद रखें. इसमें राजेश जी कुछ जो चैट बॉक्स में कमेंट्स आए हैं उनको भी लिया जा सकता है. Yes. काफी अच्छे. Yeah, I think somebody has to read first that comments. Yes. Okay, I will read the questions in the chat box. Rakesh Agarwal is asking, in 1930, Swiss scientists had warned against heavy construction like dams and hydroelectric projects in Joshimath. Is it true? And also to discuss the specific impact of the Char Dham Pariyojana. That is Rakesh Agarwal's question. Should I read a few questions or shall we take one question at a time? नहीं मेरे ख्याल Very quickly, I can respond to this. जी Please go ahead. In the 1930s, the Swiss geologists only mentioned that Joshimath was on a old landslide debris and therefore not a very strong slope. They did not say much about what kind of projects can be done or built over there. As far as the Char Dham Pariyojana is concerned, broadly you have to keep in mind that the roads are being widened to 10-meter tarred surface width. Even though back in 2018, the Ministry of Road Transport and Highways, their own planning division, had put out a notification saying that in the mountain areas, 10-meter wide roads lead to a lot of challenges, which are in the form of landslides, deforestation, loss of springs, and problems for the people of the area. And therefore, in mountain areas, the width should be narrowed to 5.5 meters tarred surface. But the government has refused to heed that. And when they cut these wide roads, very often against their own rule that slope should not exceed more than 30 degrees where you are cutting the mountain slope, the very steep slopes are cut, and it leads to all those problems that the ministry had cited. Plus, the kind of caution that needs to be exercised in terms of prior and geological investigations, those are not done. So, in other words, the kind of care that needs to be taken to build infrastructure projects
in the mountains is simply not there. So otherwise, Rakesh, you can always meet me and we can have a discussion on this. Thank you. There is a question from Professor Satish Aikant. I hope I'm pronouncing it right. That the state government, local people, and priests do not want to restrict the number of pilgrims. So is the government and other people acting against their own interests? Even at this stage, can the railways and Char Dham projects be stalled? Sati, you want to take that? Sati, आप बोलना चाहेंगे इस पर? अब ये तो आपके लिए भी है और शायद मैं भी कुछ इसमें ऐड अप कर सकता हूँ। तो हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि जो यात्रा है वो तो तभी सुचारू हो सकती है जब वहां प्रभावितों के सवाल हल हो जाएं, जोशीमठ की स्थिति स्पष्ट हो जाए कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। अन्यथा ये तो जो यात्रा पर आने वाले लोग हैं उनके साथ भी धोखा होगा कि वो यात्रा पे जोशीमठ आए और जोशीमठ में बारिश हो और कुछ हो और उनके जीवन पर खतरा पैदा हो। तो सरकार को तो पहले उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो जो जोशीमठ की क्या स्थिति है, वहां आना सुरक्षित है कि नहीं है, जोशीमठ के लोगों का जीवन सुरक्षित है कि नहीं है, वहां जमीन के नीचे अगर कैविटी बन गई है तो कितनी गंभीर है। तो ये तो सरकार के ऊपर है और हम तो इस बात को लेकर के हाईकोर्ट में भी हमने बात की है और ये चाहा है कि हाईकोर्ट इसमें संज्ञान ले और वो सरकार पर दबाव डाले कि वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। I would like to respond to Dr. Ekant in a slightly different way. Dr. Saab, as you know, all these shrines are at the close to the origins of the rivers where the valleys are very narrow. Secondly, these are all paraglacial valleys where in the geological past, glaciers had receded and have left behind huge amounts of debris, boulders and rocks on the ground. Now, in these kinds of very sensitive areas, there's a limit to how many people should be there. Just like I was saying that the slopes of Joshimath have been overloaded. We cannot build cities in these areas. As part of the Char Dham Pariyojana, the high-powered committee, we did a very basic, very preliminary analysis of the carrying capacities of Gangotri, and we came to the conclusion that Gangotri was probably already, it had reached its carrying capacity, the current number of visitors. And the others, Badrinath, Kedarnath, would reach their carrying capacity limit by the middle of this decade. Okay, so there is a limit that that is defined as the carrying capacity, and that should be respected. Now, the second part of your question, can we now step back? Well, maybe not, but maybe there's clearly a need for a lot of retrofitting. There are some areas that you will not be able to secure even with retrofitting. Okay, the kind of damage that we have done to the slopes, you cannot reverse it. You just have to avoid that whole area, that take a bypass or do something else, but you cannot fix that slope anymore. And I'm talking of slope just north of Srinagar, which you are quite well acquainted with. So you might be able to do some retrofitting. But I think far more important than retrofitting is to start planning much better. There are a lot of activities that are still development adventures that are still being planned. My God, please convert them from development adventures to real development. Thank you. सरकार की तो योजना है कि वो साल भर चलाए यात्रा को। अभी मंत्री जी का बयान आया है
और चाहते हैं कि साल भर यात्रा चले, जबकि ये केवल 6 महीने की यात्रा होती है, और साल भर चलेगी तो ये और ज्यादा दबाव होगा। और क्योंकि 6 महीने वहां बर्फ पड़ती है, तो अगर यात्रा चलेगी तो फिर वो तो और ज्यादा उसको डैमेज करेगा। The high-powered committee made a very specific recommendation on this from the wildlife point of view, that 6 months is critically needed by the wildlife of that area to survive. So we are basically going to harm our wildlife, which is very unique in those areas. You don't get snow leopards everywhere. You don't get the tar and the other blue sheep everywhere in the country. Thank you. Thank you. R.K. Meghwal has his hand raised for some time now. So can I request him to place his question? थैंक यू राजेश जी, बहुत ही अच्छा। मैं R.K. मेघवाल जोधपुर से, और मेरा सवाल सिंपल इतना ही है कि अतुल सती साहब ने जो बात कही, उसके अंदर एक बात है कि ये मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा के अंदर एक आम आदमी की तो कोई करतूत है नहीं, ये तो कॉरपोरेट या सरकारें या पार्टी है, जो भी है, जो डेवलपमेंट के वाहक है, वो मेरे ख्याल से आवे। तो क्योंकि जगमोहन जी का जैसा संगठन है प्रकृति और जो जन रक्षा अभियान, ये तो कोई बाउंड्री में नहीं बांट रहा। एक तो देश के सवाल, ये इन्होंने कहा ना कि इट इज नेशनल इशू, मेरे ख्याल से ये तो इंटरनेशनल इशू हो गया, मानव और प्रकृति दोनों को ही बचाने का। बाकी मैं थैंक्स करता हूँ, बहुत जबरदस्त आपने, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही शानदार सारे तीनों वक्ताओं ने अपनी बात को बेस्ट तरीके से रखा। धन्यवाद। Thank you. Dr. R.P. Bhatt. First of all, I wish everybody all the happiness and healthy life in coming days. एक ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक लंबे समय से हादसे होते चले आ रहे हैं, और ये जो आपदाएं हैं इनमें प्रकृति का अपना तो कोई योगदान है ही है, लेकिन कहीं पे बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है। सवाल ये है कि ये सब ठीक है, काफी लोग यहाँ पर जो है काफी बड़े लर्नेड और इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उन्होंने अच्छी बातें कही, लेकिन सवाल ये कि आगे बढ़ा कैसे जाए कि फॉर द पीपुल बाय द पीपुल में जो भी गवर्नमेंट है, जो भी लोग पावर में बैठे हुए हैं, अगर उनमें ह्यूमन टच, बहुत से लोगों ने कहा ह्यूमन टच होना चाहिए, और रूल्स और लॉ जो बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन इन दैवीय आपदाओं को तभी निपटा सकता है जब हम एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव तरीके से, बहुत इन टोटलिटी गवर्नेंस को देखें, और कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म ऐसे डेडिकेटेड उपाय सोचे जाए पूरी कंट्री के अंदर कि हम एक टोटल डेवलपमेंट की ओर अगर चलेंगे, और जिसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, 100% इन्वॉल्वमेंट होगा, और ईमानदारी भी होगी और गुड गवर्नेंस भी होगी, तभी मुझे लगता है आने वाले समय में हम जो ह्यूमन एरर्स हैं जिनकी वजह से आपदाएं बहुत विवश रूप लेती चली जा रही, अब जैसे पॉपुलेशन है, एक बड़ा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। वी आर 130 करोड़, हिमालय की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिमालय का 2/3 एरिया में पहले 1/3 लोग रहते थे, और 1/3 तराई में 2/3 लोग रहते थे। तो उस पॉपुलेशन को कैसे डील करें, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ दीज डिजास्टर्स। तो ये बहुत बड़ा विषय है, और इसमें मेरे जो 2-3 प्रबुद्ध जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने जो बात कही वो बहुत सही बातें हैं, सही अच्छे रास्ते हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इन टोटलिटी में पूरी गवर्नेंस को ठीक करने का इशू, इन टोटलिटी में साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकली एक अच्छी प्लानिंग का इशू, और इसमें एक आम आदमी का, हमारे लोगों का, कम्युनिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें विचार होना जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर भट्ट, समझ आ गया, थैंक यू। There was a question in the chat box from Anaga. Why can't the whole area be declared an eco-sensitive zone? It's a very good suggestion, except that the current government in the country has no desire to even save the one eco-sensitive zone that was created with great difficulty in 2012. I'm talking of the Bhagirathi eco-sensitive zone. And now efforts are on to intervene
and in that area, ignoring all the rules and regulations. Dehradun was the first eco-sensitive area. I think it was the first eco-sensitive area created in the country, but I don't see any eco-sensitivity in this valley. Okay, so if you want on paper, you can keep on making these things, but those have to be respected. And at the current dispensation has no respect for nature. It wants to conquer nature, and that is a recipe for disaster. Thank you. Sheikh Ghulam Rasul, please place a question. बेसिकली मेरा सवाल नहीं है, अगर आप लोग अलाउ करेंगे 2 मिनट मुझे थोड़ा ब्रीफ देना जोशीमठ टाइप का सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है. Yes, please be brief. Thank you. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो तीनों स्पीकर्स थे बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने जो बात रखी है. हमारे भी वही कंसर्न्स है जो रवि जी ने, अतुल जी ने और जगमोहन जी ने रेज किए. बट इन एडिशन जैसे रवि जी ने बताया कि कुछ वाइल्ड लाइफ रेयर है, जैसे हमारे पीर पंचाल की पूरे भारत में मारखोर गोट पीर पंचाल में है. तो अभी जो सरकार डेवलपमेंट के नाम से, रेलवे के नाम से, फिर ऑल वेदर रोड्स के नाम से टनल्स बना रहे हैं. माउंटेन्स ऑलरेडी जो पीर पंचाल माउंटेन है तो वो नया माउंटेन है फॉर्मेशन के हिसाब से. तो अभी अभी आप देखिए कि हर समय आप सुनते हैं कि रास्ता बंद हो गया क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होती है, क्योंकि खनन हो रही है. फिर जो ये हमारा पीर पंचाल रीजन है जहाँ हमारा खास काम भी है तोशा मैदान एरिया वाला, तो वहाँ रोड्स बनाने शुरू कर दिए. तो ये सारे जोशीमठ को अगर एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है तो हालात यहाँ भी ठीक नहीं है. फिर जो पावर प्रोजेक्ट्स जो है, किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्ट लें, किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट लें, दूल हस्ती हो, बगलियार हो, तो उनका भी एक इम्पैक्ट रहा है. और वो खबरें छुपाई जाती है, वो उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है. तो इस तरह के चीजें हैं जिनको अभी मुझे लगता है कि न सिर्फ जोशीमठ बचाओ आंदोलन चाहिए बल्कि हिमालय बचाओ आंदोलन चलाने की जरूरत है. तो मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ है बड़े बड़े कदावर एनवायरमेंटलिस्ट्स है, एक्टिविस्ट्स है, तो हमें चाहिए कि एक फोरम बने जो इन चीजों को, जो हेल्थ है ग्लेशियर्स का, माउंटेन्स का हेल्थ है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी नीति बने और उसमें ऑल स्टेक होल्डर्स का शमूलियत जरूर हो. तो उस तरह का हमें डिमांड रखना होगा. आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि जो किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्ट है, जो खासकर चुनाव रिवर चुनाव पे 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और वहां भी जोशीमठ जैसी सिचुएशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर की न्यूज तो बाहर नहीं जाती है, इसलिए वो उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं. तो वहां भी ये है. और रेयर जैसे किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क वहां है, वहां स्नो लिपर्ड है, ब्लू शीप है, बारल है. तो ये सारी जो नायाब वाइल्ड लाइफ है वो वहां है. तो इन्हीं सारी चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए मैं रवि जी से भी दरखास्त करूंगा. एक बात छिड़ी हुई है जो वेस्टर्न हिमालयन एक्टिविस्ट्स का अभी मीट भी होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि अगर हम सारे मिलके हिमालय बचाने की बात करें तो वो हो सकता है कि कुछ न कुछ इम्पैक्ट हो. माइनिंग हो रही है, अभी आपने देखा यहाँ लिथियम माइनिंग भी शुरू हो गई है रियासी में. तो ये सारी चीजें हैं. और फिर जो पिलग्रिमेज है, हम लोग यहाँ बात भी नहीं कर सकते हैं पिलग्रिमेज के ऊपर, तो वो कम्युनल कलर लेगा. अमरनाथ वाला अब देखिए 2 रिवर लेदर और सिंध, उनका तो 70% पानी कम हुआ है. ग्लेशियर्स अब रहते नहीं है. जिस ग्लेशियर के लिए अमरनाथ यात्रा होती है वो अब आर्टिफिशियली बनाया जाता है. तो ये हाल है कि जो अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड यात्राज है और काफी जानी भी जाती हैं हर साल. तो जरूरत है इस वक्त
इससे बेहतर मौका हमारे लिए कोई नहीं है कि हम एक स्ट्रांग मूवमेंट बिल्ड करें और हिमालय को ही बचाएं, और उसी से हिमालयन पीपल भी बचेंगे। और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो हिमालयन लोगों के लिए है कि जो पानी और लोगों को हमारे वहां से, ये तो एक बायोडाइवर्सिटी ग्रिड है जिसको बचाना बहुत जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पे एक मिलन होना चाहिए कि हिमाचल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, उत्तराखंड के लोग एटलीस्ट मिलें और ये बातें डिस्कस करें। थैंक यू। Thank you very much. Would any of the speakers like to respond, or shall we move on to the next question? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा सुझाव है कि इसको ब्रॉडर और जितनी हमारे पास हम नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं उसको बांटने का और लोगों में शेयर करने का, और जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ शेयर करने का। रसूल साहब का बहुत अच्छा सुझाव है, तो हम उससे मिल करेंगे वो काम। There was a question from Regina. Are defenders of the environment being arrested in this region? तो अतुल सतीश शायद इसका जवाब दे सकते हैं। अतुल अरेस्टेड जी, हेलो, हाँ बोलिए यस। तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। हाँ, हमारे ऊपर जरूर ये हुआ था यहाँ सेक्रेटरी लेवल पर कि इन पर रासुका लगाई जाए, और जिले में भी एसपी का ये वो था कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वहाँ जनता का बहुत दबाव है आंदोलन का, तो वो हुआ नहीं। लेकिन ये खबरें थी और ये सूचना हमको वहीं से हाई लेवल से मिली, ऐसा चल रहा है। तो हमने इस बात को सोशल मीडिया पर अखबारों के जरिए रखा कि भाई अगर गिरफ्तार करते हैं तो सारे लोग जो आंदोलन में सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो यहाँ तो नहीं, पर पहले हाँ यहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं, पहले के आंदोलनों में हमारी भी हुई हैं, लेकिन अभी इस वाले आंदोलन में तो अभी ऐसी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। थैंक यू। एक ये सवाल था, why is IIT Roorkee not being involved to promote earthquake resistant construction in the region? I think that information is wrong. IIT Roorkee is called upon to suggest earthquake resistant methods of construction. Also, the Central Building Research Institute in Roorkee is heavily involved even now in Joshimath. In fact, if I'm not mistaken, maybe Atul can confirm this, that it's the CBRI designed prefab houses that the government has been promising. But you know, all these organizations, they wait for disasters to happen. They don't proactively come out and ensure that these measures are taken in advance. After the Uttarkashi earthquake and the Chamoli earthquake in 1999, there was some effort by a few well-intentioned people to retrofit earthquake safety features in existing weak structures. But that was more of a non-government initiative, and it didn't go too far. The governments are not willing to learn any lessons. Okay. Dr. P.R. Vaidya had a question. What is the mood of Uttarakhand's people? Are they agreeable to halting of so-called development like Char Dham or hotels on river banks? Atul ji. I'll try and respond to this. Atul, आप बोलना चाहोगे, फिर आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं, मूड ऑफ द पीपल तो कैसे वो किया जा सकता है, क्योंकि वो बटा हुआ हाउस है, क्योंकि यहाँ सरकार एक बहुमत वाली सरकार है भाजपा की, और निस्संदेह जो है उनका एक समर्थक वर्ग होगा,
और बल्कि 4 धाम प्रोजेक्ट के समय में भी हमने देखा कि जब हम लोग उसके खिलाफ लिख रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो उनका ये एजेंडा है तो विकास वाला, और क्योंकि विकास का मतलब अब जो समझाया जा रहा है, तो लेकिन जहां जहां आपदा है, जहां जहां लोग उससे जूझ रहे हैं, वहां वहां लोगों में इसको लेकर के एक तो इसके खिलाफ एक माहौल, एक जनमत बना है। और अभी जो हमारी यात्रा भी निकली है और जहां जहां हम गए हैं पूरे पदयात्रा में, तो एक उसका माहौल है और जोशीमठ का एक प्रभाव तो है, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो एक बटा हुआ पूरा वो है, इसको जनमत है। और क्योंकि एक बहुमत के साथ वो लोग आए हैं तो उनका अपना प्रचार तंत्र है, वो सब है, तो उसके खिलाफ तो आपको जनमत बनाना पड़ेगा, बना बनाया तो कुछ नहीं है। अतुल भाई की बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, but there is another aspect. See, we are not saying that there should not be any development. But the question is, what do you call development? Are you talking about a development that does the greatest good for the greatest number of people? That tries to sustain your environmental, your natural resource base, as well as provide you with whatever the so-called development does? You can't have only one type of development which is destructive. So, in other words, even if you wanted to build a dam, would it not be important to see what would be the impact of that dam and then try and work within the limits that the environment has imposed upon you? That if it turns out that the pluses and the minuses add up to minus, should you not give up that idea? So I wish I had that reference with me. Professor V.K. Gaur, one of India's finest geophysicists, he has written about this in an article in Frontline not too long ago, sometime in January or February. And I would request you to please try and go through that article of Professor Gaur. Okay? Thank you. Thank you. There are no more questions and I don't see any raised hands. If there are any journalists in the audience who would like to ask any questions, they are welcome. Meanwhile, I see Kailash Joshi has raised his hand. आप अपना सवाल रख सकते हैं, please. हेलो, हाँ बोलिए. मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है. जी, मेरा ये कहना था कि हाँ, मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से अभी जोशीमठ में हो रहा है, अभी जोशीमठ से पहले ये कुलसारी एक गांव है, कुलसारी थराली के पास, वहां पे जबरकोट है, वहां पर एक स्टोन क्रेशर को सरकार ने परमिशन किया है, अनुमति दिया है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर दिया है जहां पर पानी का स्रोत है, और जब जो खुदाई उन्होंने की है उससे पूरा जो पानी के स्रोत है डैमेज हो गए हैं, और पूरे गांव पहले से ही, हम लोग अभी कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ लोग गए थे हम लोग, तो हमने देखा कि गांव वालों का कहना है कि जो अपनी आंखों से हर साल देखते हैं कि जमीन गांव की धंस रही है, और वो गांव वाले लगातार उस जमीन को जो है बरसात के बाद मैनेज करते, जहां जहां दरारें होती हैं वो दरारों को भरते हैं। तो जैसा जोशीमठ में होने जा रहा है, कोई शक नहीं है कि जबरकोट जो ऐसे जहां जहां ये स्टोन क्रेशर विकास के नाम पर डेवलप करना चाह रहे हैं, उससे ये, जबकि स्टोन क्रेशर शुरू नहीं हुआ है अभी, और जब स्टोन क्रेशर मान लिया, वो तो वहां की महिलाओं का जज्बा है कि उन्होंने स्टोन क्रेशर को रोक रखा है। रात के 2 बजे भी, रात के 1 बजे भी वहां की महिलाएं स्टोन क्रेशर के खिलाफ काम शुरू ना हो करके जो है खड़ी रहती हैं उस जगह पर। तो ये चिंता की बात है, जैसा रसूल साहब ने कहा कि हम लोगों को इस पर हर जगह के लिए चिंता करनी चाहिए,
और जो साल भर यात्राओं का जो सवाल था, अभी हम लोग देख रहे हैं कि टनकपुर के पास नैनीताल, ये चंपावत जिले में एक पूर्णागिरी का मेला चलता है, जो कुछ दिन चलता था। अभी मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है कि वर्ष भर मेला चलेगा। वो मेला जो काली नदी के आसपास है, रिवर के आसपास है, मतलब, और उससे ऐसा नहीं है कि बरसात में पूर्णागिरी मेले की, पूर्णागिरी के जो आसपास का जो इलाका है उसको नुकसान नहीं हुआ है, उसको भी नुकसान हुआ है। ये जानने के बावजूद कि नदियों के आसपास हर बरसात में नुकसान होता है, बारिश होती है, ये हम लोगों के लिए चिंता की बात है। तो यही मेरे सुझाव थे कि हम लोगों को और यूनिटी के साथ इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए। थैंक यू। Sir, Jayashree here from Hindustan Times. I just had a small clarification. I needed a small clarification from Mr. Ravi Chopra on the fact that the slopes, how Chardham project has impacted the slopes, the hill slopes. Did you say that it's very difficult to stabilize them? Retrofitting is possible, but it may be difficult to stabilize them properly. Just wanted a clarification on that. I wanted to add it to my copy. Okay, thanks, Jayashree. Yes, I said that in some locations, retrofitting may not be possible. If you travel along the Rishikesh Badrinath route, go beyond Srinagar, there is a village called Farasu. Now, while trying to widen the road at that point, they have started a new landslide. In this location, there is the reservoir of the Srinagar Dam. Okay. And each time that reservoir gets filled in the rains, and then gradually gets emptied, we see what is called the drawdown effect, which means that the river, that the water pulls out a portion of the material, the earth, the soil, the rocks inside the slope, and weakens it. So the water is weakening it from the bottom. The slope on the top has already been a landslide has been initiated over there. So this combination they will not be able to handle this. If you go a little bit beyond Farasu, there is the old slope of Kaliasor. Now the Kaliasor slope was, the landslide was created back in the 60s when this road was first being built. And since the 60s till today, despite probably over 100 crores of research being done in that area, lots of experiments, that slope they were not able to tackle. And finally, in building the Chardham widening over there, they just gave up on that stretch of the road and they've gone across the river. Okay. Yeah. Now, the location that they have chosen across the river is also one which does not show much wisdom. It is right along the river bank that they are making the road. So the same problem will happen. The river will be in flood. The river will start eroding the base of that slope, which it always does. And it's probably a sandy, what we call a fluvial terrace. So the fluvial terrace, the river will erode it, and that road will get affected. They should have gone in at least a kilometer or kilometer and a half inside the land and then built their road. But that costs money. So when you take shortcuts, then these things happen. So I can give you many more examples. The stretch at Swala in Champawat district is going to be another problem. So tons of problems.
near Darasu in Uttarkashi. And these are not going to be easy to treat. Right. Sure. Thank you so much, sir. Yeah. In the chat box, I have placed a link. We have drafted a statement in solidarity with the people of Joshimath. So if you click on the link, you can read the statement, and I will urge all of you to kindly sign that statement. If there are no further questions, I think we should conclude this meeting. Are there any further questions? Where is the link? Sorry, it's in the chat box, is it? Have you already posted? Yes, yes. Okay, let me just find it. Yeah. Okay, yeah, sure. I'll just check. Thanks. So I would like to thank all the speakers for a very excellent presentation of the situation in Joshimath. हमारा उद्देश्य ही यही था कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। कई लोग इसके बारे में जानकार नहीं है और ये जानकारी उन तक पहुंचना है, और जोशीमठ से जो हमें सबक मिलता है हिमालय के बाकी क्षेत्र और देश के बाकी क्षेत्र, वो सबक हमें लेना है। और इस दिशा में जो हमें मांगे रखना चाहिए हमारे सरकारों के ऊपर, लोगों के साथ आंदोलन रचित करना है, इसी उद्देश्य से ये मीटिंग रखा गया था। एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू हु हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग विद सच इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन। जोशीमठ के लोगों का संघर्ष अभी जारी है और रहेगी भी, एंड दे नीड आवर हेल्प। टेम्पररी हाउसिंग is one of their demands, which the government has not acceded to yet. I mean, they have promised, but nothing has materialized on the ground, and the people by themselves are seeing what they can do. So in the days to come, there may even be a civil society-led initiative for temporary housing. So I request all of you to be alert to the needs of the people and to express your solidarity. So with this, with the permission of the speakers, I would like to conclude this meeting. If any of the speakers would like to have some final words, please go ahead. Atul ji, Ravi ji, Jagmohan ji. No, I think I don't have anything else to say. I'm all talked out. Okay. Now to plan action, and as there was suggestion that if people come and a group could be made and this information which is being suppressed could be shared, at least that will make awareness there. So thank you everybody, and thank you Rajesh for conducting it so well. Thank you everyone, and thank you to Dr. Prasad, who has very kindly supported us with Zoom and has been present with us. So thank you once again to everyone. I think all of us will join in thanking you, Rajesh, and thank you, Rajesh. It was a very good meeting. And please, first before ending the meeting, please switch off the Facebook Live. Yes, I remember that. Okay.